व्हाट्सअप क्यूरियस पीपल। मेरे कजन ने मुझे ये वीडियो भेजी एंड ही सेड दैट यू वुड रियली लाइक दिस। तो बस अभी मैं ये वीडियो देखने जा रहा हूँ एंड इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक, जिसके ऊपर काफी डिबेट ऑलरेडी चलती है। एंड ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पर एआई डिबेट्स होंगी एथीस्ट और बिलीवर के बीच में। सो आई गेस एआई के बेसिस पे यहाँ पर चीजें आएंगी। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। We used a powerful AI model to create two intellectual thinkers, an atheist Hi, I'm an atheist. and a believer in God. Hi, I'm a believer in God. We put these two thinkers in a face-to-face debate to tackle one of humanity's most challenging questions. To judge this debate, we selected 5 different AI models as referees to see which arguments they would evaluate as stronger. Join us and promise not to cheat. Don't skip ahead in the video to see the final results. The debate आई begins थिंक इट्स गोइंग टू now. बी वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने सबसे बेस्ट एआई मॉडल्स को यूज किया हुआ है। The debate begins now. Does the existence of suffering and evil in the world disprove the existence of God? Yes, the existence of suffering and pain in the world is one of the strongest arguments against God's existence. If there's a God who is both all-powerful and all-loving, why would he allow innocent children to die of hunger? Why would cancer exist? Why would earthquakes and tsunamis destroy innocent families? I know some people say these sufferings are to test our faith or to give us free will, but these justifications aren't logical. A loving father would never torture his child to see how much they love him. An all-powerful God could create a world with both free will and love, but without all this unnecessary pain and suffering. It's like if I had a lab full of mice and deliberately let them suffer and die, just to see which ones would remain loyal to me. This would be unethical. आई मीन ये बहुत ही फेमस आर्ग्यूमेंट है, काफी सारे लोग यूज करते हैं कि अगर भगवान होते हैं तो जो लोग मान लो श्रद्धा वाली जगह पे जा रहे हो वो लोग क्यों मरते हैं, या फिर कोई भी इंसान क्यों मरते हैं। गॉड तो ऑल लविंग ऑल केयरिंग होना चाहिए। तो ये बहुत ही स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट आता है जो एथिज्म साइड से होता है। We asked several large language models to score each response from 0 to 100 based on these 10 criteria. The score these models gave to the atheist's first response is as follows. I don't deny the suffering that exists in the world, but this suffering isn't proof that God doesn't exist. In fact, without God, we couldn't even say something is bad or unethical. When you say innocent children suffering is bad, you're using a moral standard that itself needs a transcendent source. Consider your mouse lab example. Why do you think harming mice is wrong? In a world without God, we're all just collections of atoms that randomly came together. In this view, suffering and pain have no real meaning. They're just chemical reactions in the brain. Besides, we can't be sure that God doesn't have good reasons for allowing this suffering, like a child who doesn't understand why their parents allow them to get a painful vaccine. From our limited perspective, we might not understand all divine wisdom. आई मीन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है दो टेक से। पहला टेक अगर प्योर साइंटिफिक टेक लिया जाए कि अगर गॉड ने यूनिवर्स को बनाया और हम लोगों को पता है कि यहाँ पर सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और उस इंटरैक्शन की वजह से ये जो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं वो देख पा रहे हैं, तो इस इंटरैक्शन का एक इनएविटेबल कॉज है जो सफरिंग है। राइट। और देखा जाए बिना सफरिंग के अच्छी चीज की भी उतनी वैल्यू नहीं है। तो ये इंटरैक्शन ही इस सारी चीजों को कॉज कर रहा है। तो फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक सेंस कि ये सारी चीजें तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। नाउ दैट डजंट प्रूव कि गॉड ने बनाया है, बट ये उस आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर रहा है कि अगर गॉड होते तो गॉड ने ऐसा वर्ल्ड क्यों बनाया। और दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, मैं पर्सनली उस पर इतना बिलीव नहीं करता, वो ये है कि गॉड के पास एक बड़ा प्लान है। कई बार हमको लगता है कि मेरी फ्लाइट छूट गई, लेकिन फिर उससे इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि क्या पता। तो ये भी एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है। 70 पहले वाले से कम Your मिला। comparison with giving a child a vaccine is interesting, but there's an important difference. Parents know the vaccine is necessary for the child's health, and its short-term pain prevents dangerous diseases. But when a child dies of hunger, what greater good is there? Regarding ethics without God, your argument isn't logical. We can decide what's right and wrong based on the consequences and impacts of our actions on others. If an action causes unnecessary suffering to intelligent beings, that action is morally wrong. We don't need God to understand this. Also, if ethics must come आई मीन आई वुड डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट। हाँ, अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखे कि अगर गॉड एक इंडिविजुअल की केयर करता है, सो दैट्स ट्रू। एक गॉड को इंडिविजुअल की केयर करनी चाहिए, तो इन दैट केस किसी एक पर्सन की भी सफरिंग उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती है। बट एंड आई एम नॉट सेइंग आई बिलीव इन दिस, बट मुझे जो काउंटर आर्ग्यूमेंट इसमें दिख रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ गॉड, राइट, और वो बिगर पिक्चर देख रहा है, सो सीधी सी बात है, इन अ बिगर पिक्चर स्मॉल सेक्रीफाइसेस आर ऑलवेज देयर।
I'm not saying I support this, but this could be a counter argument. Also, if ethics must come from a transcendent source, how do you know that source is benevolent? Maybe that transcendent being is evil itself. This is Plato's famous question. Do the gods love good deeds because they are good, or are good deeds good because the gods love them? वाह 75.7 अभी तक एथीस्ट का जो पॉइंट है वो ज्यादा चल रहा है. Let me address your final point about Plato's dilemma. I believe goodness and God are inseparable. It's like asking whether a circle is round because it's round or because that's the definition of a circle. God is the embodiment of absolute. सी यहाँ पर एक फैलेसी आ गई. अभी इन्होंने बोला कि गुडनेस एंड गॉड तो होगा ही, चलो ठीक है, लेकिन फिर वो आर्ग्यूमेंट कहाँ गया बिगर पिक्चर वाला, मतलब कि वो वाला कि जो एटम्स जो रहते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उन इंटरेक्शन की वजह से कॉज होता है, सो उस केस में गुड और बैड दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए. Good, so he can't be evil. Regarding the example of starving children, it's true we can't see the greater good, but that doesn't mean it doesn't exist. You're drawing a general conclusion from our limited knowledge. Nice. It's like an ant saying that because it can't understand why humans destroy its nest to build a hospital, there must be no good reason. About ethics without God, the problem is you can't explain why we should care about others' welfare. In a materialistic world, why should the suffering of others matter to me? This becomes just a personal preference, not an objective moral truth. 71.8. The problem with your ant comparison is that we humans, unlike ants, have the ability for moral understanding and analysis. And with this ability, we see that many of the world's sufferings are completely meaningless and unnecessary. You ask why we should care about others' welfare. I say this is a question that should be asked of a believer. Do you only care about others because God said so? Meaning, if God said torturing children was good, would you accept it? As social and rational beings, we can understand that cooperation and empathy are essential for survival and the advancement of society. Ethics comes from this natural and evolutionary understanding, not from the commands of a transcendent being. I mean, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है जो बहुत लोग यूज करते हैं. थीज्म के साइड से बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है कि विदाउट गॉड लाइक तुम अच्छे इंसान कैसे बने रहोगे, तुम कैसे लॉज को फॉलो करोगे, डिसेंट कैसे बने रहोगे. तो एथिस्ट का आर्ग्यूमेंट आता है कि डज इट टेक गॉड फॉर यू टू क्या लाइक बीइंग अ गुड पर्सन. क्या अगर गॉड बोलेगा कि तुम्हें क्राइम नहीं करना है तो ही तुम क्राइम नहीं करोगे, इसके अलावा क्राइम कर देते? बिकॉज एथिस्ट का तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस है, एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है. सो डज इट टेक अ गॉड फॉर यू टू बीइंग अ गुड पर्सन? Besides, history has shown that religious beliefs themselves have sometimes led to immorality and violence. True. इट वॉज एक्चुअली गुड इनफ पॉइंट. देखा जाए तो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा वायलेंस वाले जो पॉइंट रहे हुए हैं तो वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही रहे हुए हैं. ऑल्दो रिलीजियस पर्सपेक्टिव गॉड के पर्सपेक्टिव से थोड़ा अलग हो जाता है, बिकॉज कोई ये भी कह सकता है कि दीज पीपल आर नॉट फॉलोइंग व्हाट गॉड वांट्स, बट या बिकॉज बट दे बिलीव इन गॉड, और फिर उनके साइड से ये एक्शन हो रहा है. सो इट्स अ गुड आर्गुमेंट. Your argument about the social and evolutionary origin of ethics has a fundamental problem. Evolution can only explain why we feel certain actions are right or wrong, not whether they actually are right or wrong. It's like saying that because evolution made us like sweetness, eating sweets is a moral truth. Regarding your question about torturing children, you're making an impossible assumption. It's like asking what would happen if 2 + 2 = 5. God can't say torturing children is good because that contradicts his nature of being absolutely good. It's true that some religious people have done immoral things, but this shows they've deviated from their religious principles, not that religion itself is problematic. Just like if a scientist cheats. वाओ, मतलब 3 पॉइंट दिए, तीनों बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिए. पहला पॉइंट तो सीधा था कि सही और गलत कौन कैसे बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब मोरालिटी तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज हो गई है. दूसरा बहुत ही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गॉड के एक्शन है बहुत ही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो लॉजिकल पॉइंट्स है उन सबको फॉलो करते हैं. एंड लाइक तीसरा पॉइंट फिर से सुनूंगा. But this shows they've deviated from their religious principles, not that. राइट, जो तीसरा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई रिलीजियस पर्सन कुछ गलत काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो गॉड जो उनको बताना चाह रहा है उस पार्ट से डिविएट हो गए. डजंट मीन कि गॉड उनको बता रहा है. Religion itself is problematic. Just like if a scientist cheats, it doesn't mean the scientific method is wrong. It's interesting that you say my example of child torture is an impossible assumption, because the very God you're talking about is allowing children to suffer right now. You say God can't consider torturing children as good because it contradicts his nature, but this same God allows war, famine, and disease to torture children. The 2 + 2 = 5 example isn't accurate either.
Mathematics is a logical system with clear rules, but according to you, ethics depends on God's will. So you should be able to explain why God permits some suffering but not others. About evolution, it's true that our moral feelings are products of evolution, but we can examine and refine these feelings with reason and logic. Just like science begins with आई मीन ये बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट नहीं है, बहुत बहुत रीजन से। पहली चीज तो ही इज क्लेमिंग कि 2+2 वाला 5 एग्जाम्पल गलत है, बिकॉज जो एथिकल है वो सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। हाउ डू वी नो? अभी हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मे बी वी आर नॉट एबल टू कंप्यूट दैट कि वो बिगर पिक्चर में क्या रिजल्ट कर रहा है। ये तो हमारी इनएबिलिटी हो गई ना। तो मतलब आई आई डोंट सपोर्ट दिस पॉइंट। लाइक मुझे ये बहुत। दूसरा कि जो पहला पॉइंट इन्होंने अभी रेज किया वो तो पहली वाली बात हो गई कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, इज ऑल गुड ऑल केयरिंग, तो सफरिंग क्यों एग्जिस्ट कर रही है? तो पहले वाले पॉइंट को रिपीट करके वापस ले आ रहे हैं। सो आई मीन ये देयर कुड बी अ बेटर रीजन, देयर कुड बी बेटर आर्ग्यूमेंट फॉर दिस। sensory observations but reaches objective truths through logic and experimentation. You're comparing 77.3 okay. You're comparing natural suffering with intentional suffering, which isn't right. When someone deliberately tortures a child, that's different from when a natural disaster happens. It's like the difference between someone deliberately setting your house on fire versus lightning causing a fire. Regarding the difference between mathematics and ethics, this actually confirms my example. Just as mathematical truths exist independently of us, moral truths also exist independently of us and are rooted in God's nature. These moral truths are unchangeable like mathematical laws. Your comparison with science is also problematic. Science can only tell us what is, not what should be. You can't derive shoulds from is. So even if we know empathy and cooperation are beneficial for society's survival, this alone can't be a moral principle. आई मीन बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया है आप बिलीवर साइड से, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है इस पॉइंट में कि इन्होंने ये बोला कि जो गॉड का जो मॉरल ट्रूथ है वो एग्जिस्ट करता है, वो ऑब्जेक्टिव है। बट ये प्रेमिस को ही तो प्रूव करना है, राइट? तुमने ये प्रेमिस ले लिया, उसके बेसिस पे अपना आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया, बट वो जो पहला पॉइंट है उसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? बट इन एनी केस ये आर्ग्यूमेंट काफी अच्छा था सो फार। बिलीवर साइड से जितने भी पॉइंट आए, दिस वाज द बेस्ट टिल नाउ। 74.2 fair. The distinction you make between natural and intentional suffering actually works against God's existence. Because if there's a God who controls everything, all suffering would be considered intentional. Lightning, earthquakes, and diseases are all under God's control, and he could prevent them but doesn't. Regarding is and should, your argument isn't logical. We can reach ethical principles by understanding the consequences of our actions and considering common human goals, like reducing suffering and increasing welfare. It's like when we know the goal of chess, winning the game, we can understand which moves are good and which are bad. Your claim that ethics is unchangeable like mathematics contradicts religious history. Different religions, and even a single religion over time, have had different interpretations of ethics. This shows that religious ethics isn't fixed and changes with society. काफी अच्छा पॉइंट था ये वाला। 77.9 fair. When you say God could prevent all natural disasters, you're imagining an unrealistic world. The laws of nature are essential for the world to function. For instance, the same tectonic plate movements that cause earthquakes are necessary for forming mountains and maintaining Earth's atmosphere. Your chess example is Fair interesting, enough. but remember that humans created the rules of chess. In a world without God, who determines the purpose of life? Why should reducing suffering be the goal? Someone might say increasing power or personal pleasure is more important. About changing religious ethics, you're confusing human interpretations of moral principles with the principles themselves. It's like saying, because our understanding of physics has changed throughout history, the laws of physics have also changed. Moral truths are constant. It's our understanding of them that evolves. काफी फेयर पॉइंट था। और इससे एक और चीज लाइक पॉइंट आउट होती है। बहुत सारे लोग जो मुझसे आके कहते हैं कि क्षितिज, आई नो गॉड एग्जिस्ट बिकॉज आई प्रेड टू गॉड कि ये मेरे साथ हो, और वो मेरे साथ हो गया, या फिर मैं चाह रहा था या चाह रही थी कि सो एंड सो हो, और हो गया। बट द पॉइंट इज कि दिस इज योर रैशनल आर्ग्यूमेंट जो बिलीवर साइड से आ रहा है, देन दिस शुड नॉट बी द केस, बिकॉज गॉड हमेशा बिगर पिक्चर के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, वो इंडिविजुअल केस के ऊपर इतना फोकस नहीं करने वाला है, वो एक बिगर पिक्चर के ऊपर ही फोकस करेगा। It's actually a very good point. About the necessity 74.1 fair. अभी भी एथीस्ट साइड ज्यादा स्कोर चल रहा है। About the necessity of natural laws. Look, an all-powerful God could create a world where these laws work without causing suffering. Why couldn't earthquakes only occur when nobody is in the area? Or why must cancer exist?
About life's purpose, the absence of God actually makes us responsible for determining our own meaning and purpose in life. And most humans, regardless of religion, conclude that reducing suffering and increasing happiness is a more logical goal. Even someone pursuing power and personal pleasure, when thinking deeply, realizes that in a society full of suffering, they too cannot achieve their desires. Your comparison with physics isn't accurate either. We can discover the laws of physics through experimentation and observation. But how can we discover these fixed moral truths you're talking about? वेरी वैलिड पॉइंट, कैसे करेंगे भाई? मतलब वही है ना जो मैंने पहले बोला कि हमने तो बोल दिया ऐसा होता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। 78.5, वाओ। You've asked a very good question about discovering moral truths. We can reach these truths through a combination of reason, moral intuition, and divine revelation. हाउ डू Just वी like नो दैट्स understanding reality requires not only our five senses, but also reason and logic. But let's return to the laws of nature. You say God could create a world where earthquakes only happen in uninhabited areas. But this means God would have to constantly interfere with natural laws. It's like a programmer constantly modifying their code. The result would be an unstable and unreliable system. About life's meaning, the problem is that in a random, purposeless world, even that logical conclusion you mention is just an evolutionary illusion. Why should we trust the conclusions of a brain that evolved only for survival? अच्छा पॉइंट था काफी। ऑल दो फर्स्ट पॉइंट में मुझे थोड़ा सा लूपहोल लगा, बट ओवरऑल काफी अच्छा आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट किया है। Your programming comparison is interesting, but a good programmer designs their system from the start so it doesn't need constant modification. An all-powerful God could have written the laws of physics from the beginning in a way that doesn't cause unnecessary suffering. You say we shouldn't trust the conclusions of an evolved brain, but this argument refutes itself, because belief in God is also a product of this brain. How can we trust our understanding of God and revelation when, according to you, we can't trust our brains? About the combination of reason, intuition, and revelation, the problem is that different revelations say contradictory things. Which one should we believe? At least in science, we can reach agreement through experimentation and observation. But with revelation, everyone has their own claim, and there's no way to verify it. वाओ, वंडरफुल पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट। 78.2, नाइस। You've made a good point about contradictions between different revelations. But this problem exists in science too. Scientific theories sometimes contradict each other. The solution is to find the best explanation using reason and experience. Just as a scientist chooses the theory that provides the better explanation from among different theories, we can also choose the most logical religion from among different religions. Regarding the initial design of the world, remember that we don't know if this world isn't the best possible state. Perhaps any change in the laws of physics would have caused bigger problems. It's like telling an engineer why they didn't build a stronger bridge while not knowing that a stronger bridge might have caused other problems. And about trusting our brains, there's an important difference. If God created us, we can be confident that our reasoning ability was designed to understand truth, not just for survival. अब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि आर्ग्यूमेंट किस तरीके से शिफ्ट हो गया। पहले बात हो रही थी कि अगर वर्ल्ड में सफरिंग एग्जिस्ट करती है तो गॉड उसे हटा क्यों नहीं रहा है, उसके साइड से बिलीवर का आर्ग्यूमेंट आ रहा था, सो एंड सो रीजन की वजह से नहीं हटा रहा है। और उस पर कैरी ऑन करते करते अब इसके ऊपर आ गई है कि क्या हम लोग ऐसे गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर जान सकते हैं, विच आई रियली लाइक कि अब थोड़ा सा इनका डिस्कशन दूसरे डायरेक्शन में जा चुका है। लेट्स सी क्या पॉइंट मिला है। 75.1, इफ यू कैन सी धीरे धीरे दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो इंप्रूव होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं था इनके पॉइंट से, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। Your comparison between scientific theories and religious revelations isn't accurate. Scientific theories are testable and falsifiable, but religious claims aren't. When a scientific theory doesn't match the evidence, scientists discard it. But when a religious belief doesn't match reality, it's usually justified, or they say, God's ways are mysterious. ओके, मैं बिलीवर साइड से ये चीज बोलूंगा कि व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट कि साइंस में बेटर एक्सप्लेनेशन की बात कर की जाती है, तो वो इस तरीके से कह रहे थे। फॉर एग्जांपल कि कोई गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी में सर्टेन ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक मॉडल दिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसने चलो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन दूसरी गैलेक्सी में कोई सो एंड सो ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये यूनिवर्सल मॉडल मैं इसको नहीं कह पाऊंगा। कोई दूसरा मॉडल आया और उसको इंप्रूव कर दिया, तो इससे क्या होगा कि बेटर एक्सप्लेनेशन आया, बट दैट डजंट चेंज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट गैलेक्सी। मतलब कोई लॉ ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता है, ये उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चैलेंज नहीं कर रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जा रही है सीधे सीधे। और यहाँ एथिस्ट ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि देखो, जब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में ये मॉडल काम नहीं किया, फॉल्सिफिकेशन, ठीक है, फॉल्सिफाइबिलिटी, कि चलो ये मॉडल फेल हो गया तो ये मॉडल डिस्कार्ड कर दिया, क्या तुम अपने रिलीजियस बिलीफ को डिस्कार्ड कर सकते हो? क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रिलीजियस बिलीफ में एक सब्जेक्टिव चीज भी आ जाती है,
दूसरी चीज ये आ जाती है कि तुम उसको किसी दूसरे तरीके से जस्टिफाई करने लग जाते हो, तो उसमें मेजोरिटी कंसेंसस नहीं आ पाते हैं। Your argument about the best possible world is also problematic. You say this might be the best state, but an all-powerful God could overcome any limitation. The bridge example isn't appropriate because an engineer has physical limitations, but God doesn't. And finally, your argument about trusting reason is circular. You say because God created our reason, it's trustworthy, but how do you know God created our reason? Because your reason tells you so? This argument goes in circles. ओके, मतलब लास्ट वाला पॉइंट एकदम बढ़िया था, लेकिन इससे पहला जो एथिस्ट ने पॉइंट बोला था उसमें लूप होल था, बिकॉज उसका बिलीवर ऑलरेडी काउंटर कर चुकी है कि एक बिगर पिक्चर के लिए गॉड कैन डू दीज थिंग्स, राइट। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, ये सेट ऑफ पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग विद देमसेल्व्स, और उनके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो एक बिगर पिक्चर को कॉज कर रहा है। वो बिगर पिक्चर क्या है वी डोंट नो, बट दैट्स द आर्गुमेंट ऑफ बिलीवर। 78.2। It's true that scientific theories are falsifiable, but many religious beliefs can be falsified too. For example, if it were proven that Jesus never existed, this would refute Christianity. Or if it were proven that the Quran contains contradictions, this would reject its claim of divine origin. Regarding God's omnipotence, you're presenting an oversimplified concept. Omnipotence means the ability to do anything logically possible, not contradictory things. God can't both give us genuine free will and prevent all our bad choices. That's contradictory. And about the circular argument, we discover God's existence through various ways: personal experience, philosophical reasoning, historical evidence, and the order in the universe. Trusting our reason is just one of these paths, not the only way. नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, टोटली नॉट अ वेरी गुड पॉइंट। कि भाई सीधी सी बात है, तुमने अभी फ्री विल के बारे में बात की, चलो बिगर पिक्चर के ऊपर बात हो रही थी तो ठीक है, लेकिन द मोमेंट यू टॉक अबाउट कि गॉड ने हमको फ्री विल दी है ताकि हम लोग चीजें कर सके, इट कम्स विथ विथ अ रिजल्ट कि अब वो जो गॉड है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों को ट्रीट कर रहा है। एंड इन दैट केस मेरी फ्री विल है कि अगर मैं जाके क्राइम करूंगा और किसी इनोसेंट को हार्म पहुंचाऊंगा, तो हाउ इज इट जस्टिफाइड नाउ, राइट। उसकी फ्री विल तो नहीं थी कि वो सफरिंग सहे। नॉट अ वेरी गुड पॉइंट। The problem is that the personal experiences you mention exist in all religions. ट्रू। A Hindu would say they've experienced Krishna. A Buddhist would say they've reached nirvana. These experiences can't all be true simultaneously. Regarding falsifiability, your examples aren't accurate. Even if it were proven Jesus didn't exist, many Christians would say faith in the spiritual meaning is more important than historical reality. Or if contradictions were found in sacred texts, they'd say we need to find the correct interpretation. And finally, the order in the universe? You talk about could be the product of natural processes. Darwin showed that even the most complex organisms can emerge without an intelligent designer. We no longer need to assume God's existence to explain the order in nature. बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट था, बेस्ट। 78.4। Evolution theory only explains how different species derive from each other. It can't explain why anything exists at all, or why the laws of physics are so finely tuned that life became possible. बेसिकली वहां से पैरेलल ड्रॉ किया गया है। Regarding different spiritual experiences, I agree they can't all be true in the same sense. But this is like several people touching an elephant in the dark. Each understands part of the truth. The variety of spiritual experiences might represent different aspects of a transcendent truth. And about falsifiability, it's true that some believers deny any evidence. But this problem exists in science too. Some scientists cling to their theories despite contrary evidence. This is a weakness of humans, not a weakness of religion or science itself. नो नो नो, आई टोटली डोंट एग्री विद दिस पॉइंट। इनका बेसिकली ये कहना है कि हो सकता है कि डिफरेंट रिलीजियस बिलीव जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिफेंट, मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि अगर मेरी आंखें नहीं है मेरे पास, ठीक है, और कोई एलिफेंट सामने खड़ा हुआ है, तो मुझे क्या पता चलेगा एलिफेंट कैसा होगा। मैं एक बार उसके पैर छूंगा तो मैं बोलूंगा कि एलिफेंट का शेप वैसे जो मुझे पैर की फीलिंग आई है वैसा होता है। कभी मैंने उसकी सूंड क्या बोलते टच कर ली तो उसमें बोलेगा कि ये वैसा होता है। तो बेसिकली मैं जिस भी पार्ट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, मेरा जो इमेजिनेशन होगी ऑफ एलिफेंट वुड बी लाइक दिस। और इसका पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है कि अलग अलग रिलीजियस बिलीफ में भी अपने अलग अलग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से ट्रूथ के अलग अलग एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दोस रिलीजियस क्लेम जो कहते हैं कि हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से ये सारे पिक्चर को समझ पा रहे हैं या मोक्ष प्राप्त कर ले रहे हैं, दैट डजंट जस्टिफाई दैट। प्लस बहुत सारे ऐसे रिलीजियस एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हाउ इज इट केस, लाइक आई अंडरस्टैंड कि अगर एलिफेंट वाले केस में भी देखें कि कोई सूंड को टच कर रहा है, कोई पैर को टच कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बोलेंगे नहीं ऐसा ऐसा होता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट इट्स नॉट जस्ट फिटिंग वेल हियर।
Your comparison of the elephant story and religious experiences is problematic. In this story, there's a real elephant that everyone is touching. But with religious claims, you first need to prove that there's actually something to touch. Regarding the fine-tuning of physical laws, there are two You're problems. right. Very, First, we very don't know valid how point. precise these settings really are. Perhaps life could form under very different conditions. Second, even if these settings are precise, the multiverse theory could explain it. Among infinite universes with different laws, we naturally exist in one where life is possible. And finally, it's true that some scientists cling to incorrect theories, but eventually the scientific community reaches consensus through evidence and experimentation. But in religion, there's no objective way to resolve disagreements. आई मीन मल्टीवर्स थ्योरी का पॉइंट सही है, इन अ वे इज राइट कि उससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं जो फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम है हमारी, ये सारी चीजें। बट मैं स्टिल उस मल्टीवर्स थ्योरी का रिलाय नहीं करूंगा फॉर दैट आर्गुमेंट। आई 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 कैन कम टू द पीस विद द पॉइंट कि ये रैंडमली हो गया। मुझे उस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए, मतलब अपने स्टैटिस्टिक्स को सही करने के लिए मैं मल्टीवर्स थ्योरी पे रिलाय करना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा, ऑल्दो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। 79.5। The multiverse theory you brought up has serious problems itself. First, there's no way to test or prove it. Exactly the same criticism you make of religious beliefs. Second, राइट, बट दैट्स बिकॉज अभी तक हो नहीं पाया है, हमारे पास ऐसे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग कर पाए। बट शी हैज अ वैलिड पॉइंट, हम लोग मल्टीवर्स थ्योरी का फिर कैसे भाई यूज कर ले? अभी तुमने बोला कि फॉल्सिफाइबल चीज का ही हम लोग को यूज करना चाहिए। even if it's correct, it still can't explain why anything exists instead of nothing. Regarding the elephant comparison, you're confusing the premise with the conclusion. I'm not trying to prove God's existence with this example, but rather showing that the diversity of religious experiences doesn't necessarily mean they're all wrong. And about scientific consensus, don't forget that many of today's scientific truths were once rejected by the majority of the scientific community. Consensus isn't always a sign of truth. Sometimes a minority that has reached the truth must stand against the majority. बहुत बहुत बेकार पॉइंट है, इसलिए क्योंकि अगर साइंस की हिस्ट्री देखो, साइंस बहुत ही रिसेंटली आई हुई चीज है, और उस केस में भी हम लोग बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तरफ बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्टीमेट रियलिटी हमको पता चल गई, साइंस है और ये सारे क्लेम नहीं कर रहा, बट जो चीज हम लोग ऑब्जेक्टिवली जानना चाह रहे हैं उसकी तरफ साइंटिफिक कंसेंसस बढ़ रही है। डिसएग्रीमेंट होते हैं फिर भी बढ़ रही है। ऑन दी अदर हैंड रिलीजन जो है हजारों साल पुराना है, ठीक है, उस हजारों साल पुराने में अभी तक कोई कंसेंसस नहीं आ पाया है। सो इट्स अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ व्हाट शी इज सेइंग। आई डोंट थिंक 75.6 मिलने चाहिए एट दिस पॉइंट। मुझे लग रहा है बस ये दोनों के स्कोर को बढ़ाते ही जा रहे हैं। It's true that multiverse theory isn't directly testable, but it has an important difference from religious claims. This theory follows from the physical laws we know, not from personal experiences or ancient texts. It's like when we solve Einstein's equations and arrive at black holes, even if we can't directly observe them. Regarding why is there something rather than nothing, this philosophical question exists for theism too. Why is there God instead of nothing? If you say God has always existed, we could say perhaps the universe, or multiverse, has always existed. And about scientific consensus, पहला पॉइंट बहुत वाहियात था, ठीक है, कि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करते हुए ब्लैक होल प्रेडिक्ट कर रही है। सो डस इट इज प्रेडिक्टिंग नेकेड सिंगुलैरिटी, सो डस इट इज प्रेडिक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप साइंस फिक्शन में देख सकते हैं। बट वो तो ट्रुथ नहीं है ना, ट्रुथ तो एक ही चीज हो पा रही है। जस्ट बिकॉज लॉज ऑफ फिजिक्स को मेंटेन रखते हुए मैथमेटिक्स कोई सर्टेन चीज प्रेडिक्ट कर पा रही है डजंट मीन कि इट इज ट्रू। मैथमेटिक्स मल्टीपल रिजल्ट दे सकती है, ऑब्जेक्टिवली एक ही चीज सही हो सकती है, राइट? बहुत ही बेकार पॉइंट है ये। and about scientific consensus, it's true that it's sometimes wrong. But the point is that science has a method to correct itself. Incorrect theories are discarded with new evidence. But religious beliefs typically don't change even with contrary evidence. ये अच्छा पॉइंट है, बट पहला वाला पॉइंट बहुत बेकार था। 80.5 कैसे दे दिया? आई डोंट नो। About multiverses and physical equations, the point is that these equations only describe what exists, not why it exists. Even if we understand how a multiverse works, we still don't know why these equations and laws exist. You ask why God exists instead of nothing. The difference is that God is by definition a necessary being, meaning he cannot not exist. It's like we can't ask why 2 plus 2 equals 4. But the material world could not exist or could be different. And about changing beliefs, religions have actually changed throughout history too. For instance, our understanding of sacred texts has deepened with scientific progress. The difference is that in science, surface realities change. In religion, our understanding of deeper truths deepens. आई डिसएग्री।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले हमारी जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट थे उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले ज़्यादा थी, कम हो गई है, अब हम लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं। और पहले के भी जो पॉइंट बोले थे नेसेसरी बीइंग वाला, शॉन कैरोल ने अपने एक पॉडकास्ट में इस आर्गुमेंट को बहुत अच्छे से काउंटर किया था। 76.1। This claim that God is a necessary being is itself an unfounded assumption. It's just wordplay. You define God as necessary, then say therefore he must exist. It's like if I defined a perfect dragon as a being that necessarily exists, so it must exist. Your comparison with 2 plus 2 equals 4 isn't accurate either. This is a logical truth that follows from the definition of numbers. But God's existence is an existential claim about external reality. You can't prove the existence of something in the real world through definition and logic alone. And regarding changing religious understanding, this is exactly religion's weakness. When science proves something contrary to religion, पहला पॉइंट बहुत ब्रिलियंट था, दूसरा पॉइंट जो क्लेम कर दिया कि लॉजिक और इसकी मदद से प्रूव नहीं कर सकते, मतलब इट्स अ बिट वीक आर्गुमेंट। when science proves something contrary to religious belief, believers interpret the sacred text to match science. This shows that the real Pause source of our diction। knowledge is science, not religion. ये चीज तो हम लोग देख ही सकते हैं कि साइंस के आने के बाद लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पहले से ही लिखा था। Your 79। perfect dragon example is interesting, but it has a fundamental difference from the concept of God. God, as the source of existence and first cause, logically must be necessary, otherwise, we reach an infinite regression. It's like the difference between real and imaginary numbers. Real numbers are necessary by their definition, but a dragon is a contingent being. Regarding the interpretation of religious texts, this isn't necessarily a weakness. Science also interprets old theories with new data. For example, when relativity came along, our understanding of time and space completely changed. This shows that truth is more complex than our initial understanding. And finally, science can't answer all our questions. For instance, it can't tell us why we should live ethically or what meaning life has. These questions are beyond the scope of science. Just because it is beyond the scope of science doesn't prove the existence of God, first of all. और एक और इसने पॉइंट बोला था नेसेसरी बीइंग वाला, आई थिंक एथिस्ट इस चीज को काउंटर करेगा, अगर नहीं करेगा देन आई विल टॉक अबाउट इट। It's true that science can't directly answer questions of meaning and ethics, but it can help us better understand why we ask these questions. Scientific studies show that the search for meaning and ethics is part of human brain evolution. We don't need to assume a transcendent being put these questions in our minds. About the first cause and infinite regression, why can't God be part of this regression? If everything needs a Absolutely, cause, यही God must point have था। a cause too. If you say God doesn't need a cause, why can't the universe or the laws of physics exist without a cause? And about changes in science and religion, there's an important difference. Change in science is based on new evidence, but change in religion is usually a reaction to external pressure. Science says, this new evidence shows we need to change our theory. Religion says, we need to interpret the sacred text in a way that matches science. अच्छा पॉइंट था। The point you raised about brain evolution and the search for meaning is a double-edged sword. If our brain is a product of evolution and designed only for survival, how can we trust our scientific and logical reasoning? Perhaps belief in materialism is also just an evolutionary adaptation. Regarding the first cause, the problem is that the material world has the characteristics of a contingent being, like change, limitation, and dependence on time and space. But God, as a non-material being, doesn't have these limitations. This is like the difference between numbers and physical objects. The number 2 doesn't need a cause, but 2 apples do need a cause. And about change in religion, I agree that sometimes these changes were under external pressure. But this shows that religion can adapt itself to truth, not that it's completely wrong. फर्स्ट पॉइंट काफी अच्छा था, ऑल्दो उसके काउंटर के लिए भी पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे मैं डिसएग्री करूंगा। 76.6। Your argument Fair about enough। trusting reason goes back to the same circular reasoning. You say we can't trust an evolved brain, but you're using the same brain to argue about God's existence. In fact, our ability to discover scientific truths and build technology shows that our reason, even if a product of evolution, can reach truth. Your comparison of God with the number 2 is also problematic. Numbers are abstract concepts, not real beings. The number 2 has no cause because it doesn't have physical existence. It's just a concept we defined. But the God you're talking about is supposed to be a real being that affects the world. And about religion adapting to truth, this precisely shows that religion follows science, not guides us toward truth. If religion really came from the creator of the universe, it shouldn't need so many changes and reinterpretations.
79.4. You've raised a subtle point about religion being a follower, but perhaps this is part of the divine plan, that our हाँ. understanding of truth gradually deepens. Just like a good teacher doesn't tell the student everything at once, but allows them to discover it themselves. About the difference between abstract concepts and real beings, I agree they're different. But exactly this difference shows that God must be beyond matter. आई मीन एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम मुझे दिख रही है बिलीवर पॉइंट ऑफ व्यू से कि शी इज रेजिंग प्रिटी गुड पॉइंट्स, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, बट व्हाई इज दैट सो? जस्ट टू काउंटर दैट, लेकिन वो लाइक ये नहीं बता रही है कि व्हाई दिस शुड बी द केस। उसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा व्हाई दिस शुड बी द केस। वो काउंटर करने के लिए अच्छा पॉइंट भले ही हो रहा है। If God were a material being, all the problems you mentioned would be correct. But God, like the laws of logic and mathematics, is both abstract and real. And about trusting reason, I'm not saying we can't trust reason. I'm saying that without God, we can't explain why our reason aligns with reality. This alignment itself is a sign of intelligent design. The teacher and student example can't be a good justification for changes in religion. A good teacher never gives incorrect information to their student that later needs correction. But sacred texts are full of incorrect scientific claims that later need to be interpreted. About God being both abstract and real, this is a contradiction. Mathematical laws merely describe logical relationships, not real beings. You can't say God is abstract like mathematical laws and also say he can intervene in the world and answer prayers. आई मीन बिलीवर तो उल्टा कह रही थी कि वो ऐसे इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन एट सम पॉइंट वो लाइक अपने ही पॉइंट को काउंटरैक्ट भी कर रही थी। And about the alignment of reason with reality, this is exactly what evolution explains. Beings that didn't have a correct understanding of reality couldn't survive and reproduce. We are the product of millions of years of natural selection that has aligned our brain with reality. ओके पॉइंट था यार। Your evolutionary explanation for the alignment of reason and reality isn't complete. Natural selection can only explain why we can understand things necessary for survival. But why can we understand abstract concepts like advanced mathematics or philosophy? These abilities weren't essential for our survival. About the contradiction between being abstract and real, this isn't a contradiction. God can be beyond matter, but interact with the material world, just like our mind, which is non-material, can affect our physical body. And regarding scientific errors in sacred texts, we must consider that the purpose of these texts was spiritual guidance, not scientific education. यार मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिलीवर एंड से लग रही है कि एक तो साइंस की लिमिटेशन को यूज कर रहे हैं फॉर एन एक एक्सक्यूज की तरह कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल वैलिड। दूसरा, साइंस जिन चीजों को आंसर नहीं कर सकता है उसका यूज किया जा रहा है, विच अगेन आई थिंक इज नॉट वैलिड। और ऐसे ही कुछ कंसिस्टेंट फैलेसी देखी जा रही है। If these texts had been written in today's precise scientific language, they would have been incomprehensible to their original audience. 77.4. Your claim about the non-materiality of the mind is an interesting but incorrect example. Science has shown that the mind is a product of brain activity. When the brain is damaged, the mind is also damaged. This shows that the mind is not separate from matter. Regarding abstract abilities like mathematics, these capabilities are byproducts of our complex brain evolution. A brain that evolved to solve survival problems can develop these abilities as a secondary function, just like wings first evolved for temperature regulation and were later used for flight. And about sacred texts, if they really came from the creator of the universe, they could have expressed scientific truths in simple language. For example, instead of saying the earth is flat, they could have said the Wow. earth is round. This wouldn't have required complex scientific language. ब्रूटल, काफी ब्रूटल था ये। 80.3. Finally they have touched 80. The evolution of mental capabilities has an important difference from the evolution of wings. Wings show a gradual change from one physical function to another physical function. But the gap between simple physical understanding and understanding abstract concepts like mathematics and philosophy is much larger. Regarding the relationship between brain and mind, it's true that brain damage affects the mind, but this doesn't necessarily show that the mind is the same as the brain. It's true. like how antenna damage affects television quality, but this doesn't mean the television image is the antenna. And about sacred texts, imagine if God had said the earth is round. People of that time, who only saw the flat surface of the earth, would probably have rejected this statement and ignored the entire spiritual message of the text. Wow. Sometimes even simple truth needs an appropriate cultural context. काफी अच्छा पॉइंट था, मतलब बहुत ही क्लेवरली दिया हुआ पॉइंट था कि हो सकता है कि उस टाइम के लोगों को रियल ट्रूथ मिल गया हो लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ वो फिट नहीं बैठ रहा था, एंड मे बी तब उस टाइम लोग उनके रिलीजियस टेक्स्ट पे बिलीव नहीं करते। वंडरफुल। In this debate, 76.9. both sides scored high on their argumentation, with the atheist side having a slight edge.
Keep in mind that the content of this debate, and consequently the scores, depended on the initial prompt and the evaluation criteria. The goal was to True. see how two large language models debate with each other, and in the process, perhaps we as humans could learn something from this discussion. I hope that was the case. Subscribe here for more videos. वंडरफुल वीडियो। इस ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मतलब काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, बहुत सारे लूपहोल्स भी थे। बट ऑब्वियसली कई बार प्रॉम्प्टिंग, इनिशियल प्रॉम्प्टिंग के ऊपर भी इशू आ सकते हैं। अगर इसे कोई थोड़ा हम लोग ज्यादा और लॉजिकल साइड में ले जाए तो और रिगरस डिबेट हो सकती थी। बट इन एनी केस इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस डिबेट। सब्सक्राइब टू एस्ट्रो क्षितिज।